बहुत स्वागत आप सभी का गुड आफ्टरनून होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल people preparing for the year 2025 this session definitely will guide you as to where you should start your preparation from, right? If you are preparing for the year 2025, lots of I'm sure thoughts going in your mind as to where should we focus upon right now in the month of December. I am how to plan month wise, all such other details we'll be sharing with you guys in detail in this session. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत make sure that you quickly subscribe to the channel so that you do not miss on such important videos that we keep bringing to all of you, right? And if you haven't joined us for our 2025 batch, you can do so, right? Do not wait for any opportune moment. This is the best possible time. The earlier you start, the bigger the advantage is, right? At BYJU'S exam prep you get free 3-day trial, so do not miss this. Just get a flavor of what are the things that are on offer here at BYJU'S exam prep, right? Go through the recorded video library, go through the live classes, the study material and everything that is available on our dashboard. Check that out and then take a call, right? So ये तो सबको mandatory है दोस्तों, करना ही करना है. All right, चलिए. Now when we talk about today's topic, I'm sure you all are eager to know when should we actually start our preparation, right? What is the best time to start our preparation? See, the CLAT 2024 was just conducted, right? If you are thinking ki we will wait till my 11th is over, my main exam will be done, I'll start in the break, that's the single biggest mistake that you can do, right? So don't do that. Don't start late, right? Make sure that you're starting now. You're starting as early as possible. You're giving yourself the best shot of reaching the best law school. If you're starting you can say mid session, if you're starting in June, starting in July, starting in September, obviously you're kicking your chances away. So don't do that, right? Start early. The earlier you start, the bigger the advantage will be, because you will be able to balance out your board exam prep as well. You know that your board exams will be most of you will have your board exams in probably, let's say, 2025. So if that's the case, you will be having your pre-boards during November and December as well, when the peak time for CLAT will be there. So that time, lots of time will actually will go down the drain because of you trying to balance things out. So it's important that we start early and we give ourselves this edge. Just a second, something went in my eye, I think. All right, chaliye. One should know when to study and when to rest. This is very important, right? When कुछ तो आग में चला गया, कोई बात नहीं, चलिए. So one should know when to study and when to rest, right? This is the time to actually put in the best foot forward, to put in that extra effort, anything and everything in your body, right? जितनी भी energy है सारी की सारी आप में लगानी है इस exam के लिए, right? So avoid burnouts, right? Avoid doing things in one go. Say for example you're thinking कि पूरे हफ्ते की पढ़ाई मैं सिर्फ सैटरडे संडे को करूंगा, या फिर ओनली आई विल स्टडी इन ऑन वीकेंड्स, राइट? दिस इज नॉट समथिंग विच इज एडवाइजेबल. दिस इज your competitive exam which will give you lots of rewards in the future. So this is the time where you make the most out of the current efforts, right? So अभी जो आप effort करोगे उसके dividends आपको मिलेंगे बाद में. तो right now if you just burn yourself out, एक संडे पढ़ा आपने, पढ़ लिए 10 घंटे, उसके बाद जो है आप इतने टायर्ड हो गए, इतने थक गए, इतने बोर हो गए, नाउ यू आर नॉट स्टडीइंग इट फॉर द नेक्स्ट 7-8 डेज. तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. 7 दिन में 8 घंटे पढ़ें या 7 दिन में 30 घंटे पढ़ें, बेटर क्या है?
Of course 30 hours, right? So every day give 4 hours. On your day off, that's the time when you maximize your time, right? That's the time जब आप थोड़ा सा extra effort कर सकते हो, right? So whenever you have your weekends or you have your holidays, that's the time when you put in extra effort for your preparation, right? Avoid being too relaxed, guys. This attitude needs to change कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत, मेरा दोस्त तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी दोस्त और ये सब से they are all competitors, right? So understand that your job is to get all India rank 1 to 70 in order to reach to NLSIU Bangalore. If we have to reach NLS Bangalore, right, we have to secure all India rank 1 to 70. That means we have to be ahead of 60,000 students. We have to be ahead of 60,000 students. So to reach there, to be ahead of 60,000 students, of course, a special effort is required and you have to be the best in the country, right? So this is not to put pressure on you, but this is to realize where we have to start from and where our priorities lie. So if you are preparing for this year, you're preparing for CLAT 2025, CLAT should be your primary goal. Everything else is secondary. Make this year count. Exam is in the month of December. That means you will have for your 12th standard, you will have good January to March to prepare solely. वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको. January to March पूरी तरह prepare कर सकते हो आप boards के लिए. That means boards are pretty much sorted. The eligibility criteria for CLAT exam in your boards, they just ask merely 45% for general category, 40% for reserved category, right? Reserved and unreserved. So there is no such major requirement of having a good 12th score. That's why lots of people opt for dummy schools and all sorts of other things, which actually should not be done, because you can easily strike a balance between your 12th and your CLAT exam preparation. It is just about setting your priorities straight. Your job is not to get 100% by let's say December. कि December तक ही मैं इतनी 12th की पढ़ाई कर लूंगा कि फिर मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अरे नहीं, बाद में करना है यार. January और March में क्या करोगे? That is not the time where you can prepare for CLAT, because the exam for CLAT is in the month of December. That's solely the consortium's decision because of keeping in mind your 12th boards, so that you can focus on your boards post December. तो ये एक अच्छी चीज है, इसका फायदा उठाइए. एंड इफ यू आर इन योर 11th स्टैंडर्ड नाउ, दिस इज द टाइम व्हेन यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम, राइट? सेल्फ बिलीव. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. इफ यू डू नॉट बिलीव इन आवर एबिलिटीज, हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, तो कैसे होगा, राइट? सो यूज योर टाइम judiciously, use your time well. When you'll start making progress, you'll start feeling confident, and obviously for all this to happen, it's important that we plan our next 12 months very, very judiciously, right? Only then we can achieve success, right? Who is this in front of you? Sure, pretty much everyone knows this. Usain Bolt, right? It just takes him 9.5 to 9.8 seconds to complete 100 meters, right? And he gets Olympic gold medal. Whichever event he has actually been to, is one gold there. Fastest man on the planet, right? Just 9 seconds. But do you know, to make sure that he does not take 10 seconds, or even he can improve 0.5, 0.05 second, 0.10 second, 0.2 second, to make that improvement, he trains for more than 10 hours every day, right? So that's the kind of attitude, that's the kind of sporting spirit we have to also have, right? That we are leaving no stone unturned to reach our dream, right? Like he did, right? Like the one we see in front of us, right? Usain Bolt. Same kind of spirit is what is required, right? Now let's talk about the month-wise strategy for our exam, starting from January. So what we have done is we've clubbed down certain months together. In January, this is the time when we are learning something new, a completely different exam. Till now, we were actually preparing for exams which were conducted by either CBSE or by our school or RBSE or whichever board you're from, right?
Here we are doing competitive exams, which means there is no pass and fail wala concept. It is just about how much rank you have secured, not even marks, because let's say the cutoff this year is 95 plus as we predicted here at BYJU'S exam prep, right? तो 95 प्लस कट ऑफ गई, तो वहीं पे अगर आप बात करें बाकी पिछले वाले एग्जाम्स की, द कट ऑफ वाज रिलेटिवली लो, relatively less. So each year the cutoffs keep on changing, but the rank that remains constant. You have to have clear idea about what you need to do. So January, February to March, April to May, June to July, August to September, October, December. You have to have proper targets for these months. What do you want to achieve from these months? This is what we have to understand, right? So let's start off with January. सबसे पहले you have to be clear with respect to your priorities. This is the month where you have to decide what you need to do. If law as a career you want to pursue, then definitely you have to have good decisions. You have to take good decisions, smart decisions, which help you in cracking the exam. So be clear with your priorities, what you want to do, right? If your intent is to make sure that you crack CLAT and you reach NLS Bangalore, do remember that even if you score 100% marks and your all India rank is 1032, you will not get NLS Bangalore. No, you will not get. And if your score is in 12th 45% and your all India rank is 1, you will definitely get NLS Bangalore. So have your clarity, right? I'm sure, I'm not saying that 45% ही आएगा आपको 12th में. Of course you will have time post January, right? आपके पास time रहेगा say from obviously Jan 2025 to March. ये तो पूरा disturb ही नहीं करेगा कोई आपको इस time में. और obviously during your CLAT prep also schools भी जाएंगे आप, तो वहाँ पे भी preparation आपकी तो होएगी ही. Understand that why we are focusing here on priority, because there is competition. There is 60,000 students apart from you who are also appearing for this exam. The number of seats that there are 3,000, approximately 3,100 seats, and you're fighting for all these seats. So 3,000 seats, 60,000 students, 1 in 20 student will actually make it to the national universities, right? So we've understood our competition now. 60,000 students के साथ हमारा competition है. So start कैसे करना है? How shall we begin? सबसे पहली चीज है previous year question papers. If you look at the entire journey of the previous year question papers, starting from the year 2008, if you look at 2008 to 2024, you'll see lots of curves, right? Lots of times the pattern has changed recently, especially the last 5 years, 2 times the pattern has changed. Earlier there were 200 questions, then there were 150, now there are 120. Earlier there used to be single one-liner questions, now there are passage-based questions where reading heavy, things are quite reading heavy. Now the focus has to be on reading, having a good reading speed, right? तो ये बहुत जरूरी है. Start with the previous year question papers to understand what are the kind of questions that are repeated, what are the kind of topics that are touched frequently, and are the 2008-9 questions still relevant? And you'll find yes is the answer, right? If you look at 2008, there are lots of times questions from 2008, 9, 10, 11 which have been repeated in the subsequent years. So previous year question papers are the perfect tool because they give us an idea of what are the kind of surprises and things that the CLAT consortium might ask us, right? For all the sections, this is absolutely super duper important. So in the month of January, our job is to go through the previous year question papers, have a clear mindset, right? Secondly, start with async videos. It's very important that we understand that there is a you can say a bank of 300 plus pre-recorded videos. 300 से भी ज़्यादा pre-recorded videos हैं across various sections, right? So what you are supposed to do? You're supposed to read them all. You are supposed to watch them all. The duration is from 15 minutes to 30 minutes. So you can watch all of these videos at your own pace, at your own time. जनवरी में खत्म करो. जनवरी से सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप?
टेक इट इन February एंड मैक्स. बट इस टाइम में अगर आपने ये एसिंग वीडियोस खत्म कर लिए, nobody can touch you. You will definitely be in a complete different league altogether, because पहली बार for the first time your syllabus will be completed on your own. First time syllabus complete हो जाएगा आपका, कम से कम अपनी आंखों के बाहर आपने पूरा सिलेबस निकाल दिया है. जस्ट इमेजिन, राइट. 3000 सीट्स हैं, आपको पता है फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. 300 से भी ज्यादा प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मोर देन 300 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस. जस्ट वॉच देम. देयर टोटल वॉच टाइम आप देखोगे अगर तो 15 मिनट के, अगर 15 से 30 मिनट है जैसे मैंने आपको बोला, तो 20 मिनट्स अगर अपन एवरेज टाइम पकड़ लेते हैं एक वीडियो का, तो कुल मिलाकर आपको 6,000 राइट, 6,000 मिनट्स देखने हैं आपको. 6,000 मिनट्स को आवर्स में कम करेंगे तो आप रफली आपके लिए 100 घंटे के आसपास आपका पड़ेगा. आराम से पूरा जो है वो आप देख सकते हो, राइट. 100 आवर्स का आराम से आप टारगेट पूरा मंथ में कवर कर सकते हैं. यू कैन वॉच इट एट योर ओन टाइम. 3 घंटे अगर रोज के भी देखें, काफी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, है ना. Sir, I have my pre-board till 5th and I haven't studied anything because of CLAT. Can I resume my CLAT and MSCD preparation from 5th, 6th onwards? Okay, beta, do that. We are also conducting a session on MSCD preparation today at 4 p.m. Do not miss this, Nikhil. ठीक है, चलिए. All right, done है. ठीक है जी, चलिए. अब जनवरी में हमें क्लैरिटी मिल गई, पहली बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया. नाउ फेब्रुअरी एंड मार्च. सबसे पहले हमने सिलेबस कंप्लीट किया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे. नाउ वी आर अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स देयर आर, राइट. एक और चीज जो आपको यहाँ जनवरी में करनी है, यू हैव टू गो थ्रू द क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट. ये भी बहुत जरूरी है, मैं भूल गया था यहाँ पे. क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट देखो और पूरी वेबसाइट का एक एक कॉलम सब कुछ देख डालिए. वॉच एवरीथिंग दैट इज देयर, राइट. एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, लिंक टू द कॉलेजेस, वॉच देम ऑल. Alright, February to March is the time to get acquaintance with the exam preparation. Now we have done the pre-recorded videos, we are done. This is the time when we start preparing for our upcoming mock tests, upcoming exam. Now we have clarity of what are the things will be taught to us, what are things we have to do. We are sure now about our priorities as well. Now is the time we prepare a robust plan, right. This is the time when we crack the code with respect to how much time per day I can spare, right. Every person will spare differently. Someone will spare 5 hours, someone will spare probably 10 hours, right. You have to identify आप कितना टाइम दे सकते हो. आपका अब आपका शेड्यूल चालू हो चुका है. This is the time when you decide कि यार how much time आपके लिए it's actually feasible. Now you are clear with your priorities as well, hopefully, right. कि ये कितना हो सकता है, 12th में प्रिपरेशन मेरी कैसी हो रही है, 11th में अभी चल रहा है आपका, तो वो सब जो प्रिपरेशन आपकी 11th की है उसका भी एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि 12th में आएंगे तब भी इससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा. तो वो सब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप मैनेज कर सकोगे, कब सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है. यू गेट क्लियर आइडिया, राइट. एंड देन मेक श्योर दैट वॉट एवर टाइम पीरियड यू सिलेक्ट, मान लीजिए आपने 4 घंटे डेली का किया है, तो 4 आवर्स अगर आपने डेली का ऑप्ट किया है तो भाई 4 आवर्स आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट. दिस इज द टाइम व्हेन वी फॉलो वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड. ठीक है. स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस आप सब समझ ही चुके हैं. एंड अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिशन. नाउ यू हैव by the end of January, max to max I believe February, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, right. So you already have understood your competition, कि आपका कंपटीशन जो है वो क्या कर रहा होगा, अभी तक सो रहा होगा, 11th की तैयारी कर रहा होगा ज्यादातर, और आपने एक बार पूरा अपना सिलेबस कर चुके हो और आप दूसरी बार अब अपना सिलेबस करने के लिए भी तैयार हो, right. You already have a proper plan of action of how much time you would spare for your CLAT exam, राइट. आपने ये कोड जो है वो क्रैक ऑलरेडी कर दिया है, बाकी लोगों को बहुत समय लगेगा ये क्रैक करने के लिए, राइट. सो दिस इज द बिग एडवांटेज दैट यू विल हैव. अप्रैल टू मई का टाइम है दोस्तों वापस से फोकसिंग ऑन
कोर्स कंप्लीशन। सेकेंड टाइम हम अब शुरू करेंगे हमारा देखना एसिंक्रोनस वीडियोस। दिस इज द सेकेंड टाइम वी आर वॉचिंग दिस। सो फर्स्ट टाइम हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखे जनवरी में, सेकेंड टाइम हम देखेंगे वापस अप्रैल और मई में। 2 बार हम प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू हमारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कोर्स कंप्लीट कर देंगे। लाइव क्लासेस तो ऑलरेडी होगा, उसके अलावा 2 बार खुद से हम कर देंगे। एंड वी विल बी अटेम्प्टिंग द प्रैक्टिस टेस्ट्स डे इन एंड डे आउट, राइट। प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपके, वो आपको अप्रैल मई में भी करना है और आपको फरवरी मार्च में भी करना है प्रैक्टिस टेस्ट्स, ठीक है। जितने ज्यादा हम टेस्ट दे सके यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा, हैबिट आ जाएगी हमारी कि भाई टेस्ट देने से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, डिफिकल्टी लेवल कैसे होगा टेस्ट का, ये सब आइडिया लग जाएगा। आप सोचिए मई तक आपने 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके अलावा लाइव क्लासेस लगा रहे हो, आप कितना कितना आगे निकल जाओगे। कितने सारे बच्चे, मतलब 60,000 में से 59,000 बच्चे जो हैं वो अभी तक मई में 20% भी सिलेबस नहीं किया होगा, और आपने यहाँ पे 2 बार एसिंक्रोनस वीडियोस देख लिए और आप 2 बार सिलेबस कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हो। और लाइव तो चल ही रहा है, यानी कि 2.5 पौने 3 बार तो ऑलरेडी आपने 2.5 टाइम्स यू ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस। So how ahead you will be in your competition, right? With respect to your competition, these 2 months will help you set the tone. If you do follow this religiously, trust me, you can guarantee yourself a seat in the top national universities. Form habit of sitting 2 hours straight. ये भी आपको मेक श्योर करना है अप्रैल से मई में, भाई आफ्टरनून में सोने का नहीं है, राइट। फ्रॉम 2 to 5 ये तो हैबिट डाल दीजिए। चाहे आप, मैं जानता हूं स्कूल से आ रहे होंगे, डू नॉट स्लीप। और विशेषकर इस टाइम में हमें पढ़ना है, राइट। दिस इज द टाइम व्हेन वी स्टडी। नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर, no matter what you have done, don't have the habit of sleeping during afternoon. Our exam is in the month of December. It is during afternoon, and if we are having the habit of sleeping during afternoon, it will be very difficult for us to change that habit at a later stage, right? Our brain's efficiency will decrease automatically without you realizing during afternoon if you have a sleeping habit. So मेक श्योर दैट ये स्लीपिंग हैबिट जो है इसको हम दूर कर सकें, ठीक है। चलिए, जून और जुलाई का जो टाइम है यहां पे हम अब फोकस करने लगे हैं मॉक टेस्ट में। तो हम मॉक टेस्ट करेंगे और हम करेंगे एनालिसिस, राइट। एनालिसिस करना भी जरूरी है। कितनी सारी चीजें हमने जो भी अटेम्प्ट किया है उसमें क्या क्या, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी हैव कमिटेड। नंबर 1, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स एंड डू नॉट रिपीट देम। नंबर 2, time. How much time are you giving to every section, right? So time management, this is also something that you will learn here, right? How much time you are giving to a particular section, पहला कौन सा attempt order क्या है आपका, पहला कौन सा सेक्शन कर रहे हो, दूसरा कौन सा कर रहे हो, तीसरा कौन सा कर रहे हो, ये सब फिगर आउट करने का ये परफेक्ट टाइम है। एनालाइज करना अपने अटेम्प्ट्स को कि मुझे अगर 1 घंटा लग रहा है लेट्स से लॉजिकल में, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट डू। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि सबसे पहले ये समझ लें कि जो 2 घंटे का एग्जाम होता है उस 2 घंटे में से फर्स्ट आवर हमारा जो है ब्रेन इज द मोस्ट एक्टिव। आवर ब्रेन इज मोस्ट एक्टिव इन द फर्स्ट आवर। सेकेंड आवर आते आते थोड़ा सा टायर्डनेस आती है, और शुरू में जब आप मॉक दोगे तो ये अक्सर होगा आपके साथ। तो इस वजह से 2 घंटे लगातार बैठने की जब हैबिट है हमारी, तो हमारी एफिशिएंसी ब्रेन की बढ़ेगी, हमारा स्कोर भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये सब करना है हमें, और रीअटेम्प्ट करने हैं हमें सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस। रीअटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस, जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको वापस से रीअटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। डेवलप गुड हैबिट ऑफ doing analysis immediately after your mock tests. तो जून और जुलाई डेडिकेटेडली हमें कर रहे हैं जी मॉक टेस्ट। इतने मॉक टेस्ट करने हैं और इस तरह से एनालिसिस करनी है कि जब आप देखेंगे, आप तीसरे चौथे मॉक पे आओगे, आपका स्कोर आने लग जाएगा, आपका हाई स्कोर पहुंच जाएगा 90 प्लस 95 प्लस पहुंच जाएगा, और आपका कंपटीशन जो है बाकी जो बच्चे देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे आपसे 65 और ये 66, ये सेकंड रैंक है। तो इतना बड़ा लीप अगर आपको लेना है तो ये सारी चीजें करनी है दोस्तों। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है उसको ये जरूर दिखाइएगा, ठीक है।
अगस्त एंड सितंबर की बात करें तो यहां पे अब मॉक्स दे रहे हैं हम। तो दिस इज द टाइम टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज आवर वीक सेक्शन। तो हमें करना क्या है, 3 सेक्शन कोई भी ऐसे होने चाहिए जो हमारे सुपर डुपर स्ट्रांग हो, कोई भी 3 होने चाहिए। सितंबर तक ये आइडेंटिफाई करना है आपको 3 सेक्शन जहां पे 80% से ज्यादा आपके अटेम्प्ट्स हो और 90% एक्यूरेसी हो उन 3 सेक्शन में। ठीक है, कोई भी 3 सेक्शन हो सकते हैं वो। 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए और 80% अटेम्प्ट्स 3 सेक्शंस में। जैसे मान लीजिए ऐसे सेक्शन है 40 क्वेश्चंस है तो उसमें 80% अटेम्प्ट यानी कि 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए और एक्यूरेसी 90% यानी कि 28 से 29 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, राइट। अगर कोई सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चंस है तो उस 30 क्वेश्चंस में आपके मिनिमम 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए और ये यूजुअली। और अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो एक्यूरेसी होनी चाहिए दोस्तों आपकी 21, राइट, 21 के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको टारगेट लेके चलना है और हर सेक्शन की एक स्ट्रैटेजी बनानी है। मान लीजिए आप किसी सेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वर्क कीजिए, उसको सुपर डुपर स्ट्रांग बनाइए। अगर कोई सेक्शन में वीक है तो उसको छोड़ना नहीं है, उस पर भी वर्क करना है, उसको भी टाइम देना है, आधा घंटा रोज एक्स्ट्रा दीजिए उस सेक्शन को। एम फॉर स्कोर इंप्रूवमेंट आफ्टर एवरी मॉक, वापस देखिए कहां मेरे से गलती हुई, कहां मैं और थोड़ा एफर्ट कर सकती थी, वेयर कुड आई एक्चुअली वर्क अ लिटिल बिट मोर टू गेट मोर मार्क। 2 नंबर कहां बढ़ सकते थे, 3 नंबर। अगर मैं ये सेक्शन पहले करती तो मेरे फायदा होता क्या, इफ आई वुड हैव अटेम्प्टेड प्रॉब्ली मैथ्स फर्स्ट वुड आई बेनिफिट, राइट। तो ये सब एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी स्कोर बढ़ेगा। अक्टूबर से दिसंबर का टाइम है, अब ऑब्वियसली आपका सिलेबस हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हो चुकी है। दिस इज द टाइम व्हेन यू फोकस ऑन ड्राउनिंग योरसेल्फ इन मॉक टेस्ट्स, रेगुलर प्रैक्टिस, मॉक्स, स्टडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। वीक सेक्शंस पे वर्क करना है और ये वो टाइम है जब आप बाकी जो टाइम है, आप जो 12th को इग्नोर भी कर रहे थे, अब ये टाइम है क्योंकि इसमें प्री बोर्ड्स भी होंगे, सब चीजें होंगी, आपको प्रेशर नहीं फील होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सब कुछ कर चुके हो क्लैट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कि अब यहाँ पे मॉक्स दे रहे हो, साथ में आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह जो करना है वो सब आप मैनेज आसानी से कर पाओगे, स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपकी प्रिपरेशन होगी एकदम शानदार। रिवीजन नोट्स जो आपने अभी तक बना रहे हैं लगातार यूट्यूब वीडियो से, लाइव क्लासेस से, वो सब अब जरूर आपके इस टाइम पे काम आएंगे। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको मंथ वाइज हमने बताई। अब बहुत ही सिंपल है, अभी तुरंत क्या करना है। पहला, ऑफिशियल क्लैट वेबसाइट पे जाइए। सेकंड, रिसर्च करो पेपर पैटर्न पे। तीसरा, शुरू कर दो पढ़ना, रीडिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, start reading editorials from newspapers and start your online preparation immediately with us, right? We here at BYJU'S Exam Prep have launched the CLAT 2025 comprehensive course where we are giving students something which is absolutely fantastic. 300 se bhi zyada recorded videos you get immediately once you join us, right? So the pre-recorded, the async videos that we were talking about, you can complete your syllabus way in advance of your competitors by watching this. You get 380 plus hours of live classes as well. You get 55 mock tests which actually prepare you for all law entrance exams with video solutions. So wherever you are stuck, you can watch the video solution, you're good to go. Thousands of topic wise practice questions, as you can see, thousands of sectional practice tests, hard copy material, doubt resolution, CLAT Ignite magazine. In short, whatever is needed to ace the exam, you my dear friend will get that. करना क्या आपको, इस नंबर पे कॉल करना है, have a word with our ACE counselor and they'll definitely guide you through. अब इसके साथ ही make sure that you follow us on all our social media handles. The details are there on your screen. जल्दी से इस नंबर पे कॉल कीजिए और फटाफट से आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। यू कैन फॉलो us on all our social media handles. डिटेल्स आपके सामने है। So that's it guys for today. आज के लिए बस इतना ही. We'll meet again in the next session. तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, राइट। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसा लगा ये सेशन ये भी जरूर बताइएगा इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द अपकमिंग क्लासेस।